उसको मैंने बारीकी से सुना है। मुझे लगता है या तो निर्दोष भाव से या तो राजनीतिक कारणों से ढेर सारी भ्रांतियां कई सदस्यों के मन में भी है और कई सारी भ्रांतियां सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से पूरे देश भर में फैलाने का प्रयास भी हो रहा है। बिल पर चर्चा का जवाब तो माननीय रिज्जू साहब देंगे। मैं कुछ बातें यहां रखी है, इसको मेरी समझ के हिसाब से क्लैरिफाई करने का जरूर प्रयास करूंगा। ये वक्त एक अरबी शब्द है। वक्त का इतिहास मान्यवर कुछ हदीसों से जुड़ा हुआ मिलता है और आजकल जिस अर्थ में वक्त शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब है अल्लाह के नाम पर संपत्ति का दान, पवित्र धार्मिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति का दान। मान्यवर वक्त का समकालीन अर्थ, अभी जो अर्थ हम समझ रहे हैं, वो इस्लाम के दूसरे खलीफा श्री उमर के समय में अस्तित्व में आया। एक प्रकार से इसकी आज की भाषा में व्याख्या करें तो वक्फ एक प्रकार का चैरिटेबल एंडोनमेंट है और जहां एक व्यक्ति संपत्ति, भूमि या मूल्यवान संपत्ति धार्मिक या सामाजिक भलाई के लिए दान करता है, बिना उसको वापस लेने के उद्देश्य से वहां वक्फ की रचना करती। इसमें दान देता है, वो शब्द का बड़ा महत्व है। दान उस चीज का ही कर्ज किया जा सकता है जो हमारा है। सरकारी संपत्ति का दान मैं नहीं कर सकता मान्यवर, किसी और की संपत्ति का दान मैं नहीं कर सकता। दान उसी चीज का किया जाता है जो हमारा है। मान्यवर, इसी विषय पर ये सारा जो बहस चल रहा है। भारत का जहां तक सवाल है, दिल्ली में सल्तनत काल के प्रारंभ में मुइज़ुद्दीन घोरी के समय पर पहली बार वक्फ अस्तित्व में आया। अंग्रेजों के जमाने में 1863 के धार्मिक दान अधिनियम से चलता था। बाद में चैरिटेबल प्रॉपर्टीज एक्ट 1890 से चला। उसके बाद 1913 में मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट अस्तित्व में आया। तब तक ये सारी प्रक्रियाएं चैरिटेबल एक्ट के तहत चलती थी। मान्यवर, आजादी के बाद वही एक्ट को 1954 में वक्फ के केंद्रीकरण के लिए बदला गया। 95 में वक्फ न्याय अधिकरण और वक्फ बोर्डों की स्थापना की। अब ध्यान से सुनिएगा मान्यवर, वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड ये 1995 से आए। ये पूरा झगड़ा जो चल रहा है, आपने नॉन हिंदू को रख दिया और नॉन मुस्लिम को रख दिया, गैर मुस्लिम को रखा। वो झगड़ा वक्फ में दखल करने का है। पहले तो वक्फ में कोई गैर इस्लामिक सदस्य आएगा ही नहीं, ये स्पष्टता समझ लीजिए। ना मुतवल्ली गैर इस्लामिक होगा, ना वाकिफ गैर इस्लामिक होगा। मान्यवर, वहां कोई प्रोविजन नहीं है। जो धार्मिक संस्थाओं का संचालन करते हैं उसमें कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति रखने का प्रावधान किया भी नहीं है, हम करना भी नहीं चाहते हैं मान्यवर। इसलिए जो बड़े बड़े भाषण करते हैं कि समानता का अधिकार चला गया, दो धर्मों के बीच में समानता नहीं रही, मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों के बीच में दखल खड़ी हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला मान्यवर। इस दृष्टि से देखें तो 1995 तक वक्त की
काउंसिल और वक्फ बोर्ड था ही नहीं। Sir, in spite of the work bill having been referred to the JPC, the minority community have raised various concerns, sir. Lot of Muslim organizations like All India Muslim Personal Law Board, Jamaatul Ulama, and Jamaatul Islam Hind, and various other Muslim organizations have raised their objections. And even our party has raised objections in the JPC, sir. All our objections were in line with what OICG has also raised. So most of them were not considered. And in a country where we have almost 14.6% Muslims and 20 crore, it translates to 20 crore people, I think their concerns should be taken very seriously. Sir, we have concerns regarding this bill, and I would like to give out the reasons why we are going to oppose this bill, sir. So this bill is unconstitutional as it violates Article 14, 25, 26, read with Article 13 of the Constitution. Article 13 of the Constitution says that laws inconsistent with or in derogation of the fundamental rights shall be void. Sir, even Article 14 says equality before law and equal protection of the law. Sir, even Article 25 guarantees all citizens the right to freely profess, practice, and propagate their religion, sir. And Article 26 says that subject to public order, morality, and health, every religion, denomination, or any section thereof shall have the right to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes, and to manage its own affairs in the matters of religion. Sir, this also violates Article 26, and there have been unnecessary changes like changing the name and inclusion of non-Muslim members under Section 9 and 14 of the bill, which is unnecessary. And also the bill weakens the Waqf Board financially, sir. Amendment to Section 72(1) reduces the annual contribution payable to the board from 7 to 5%. This provision has the potential to bankrupt a board, sir. And there are various other concerns also. So we oppose this bill, sir, and I would like to mention that Telugu Desam Party took our name. So I would like to say that what they have spoken today and what they have done today, not one minority in our state will approve of that, sir. And Y.S. Jagannath Reddy has given a word that he will stand by the Muslim community for the Waqf Board bill, and we have stood our ground. And I would like the people of Andhra Pradesh to note that Chandrababu has ditched the minority community, sir. Thank you very much. Sir, in spite of the Waqf bill having been referred to the JPC, the minority community have raised various concerns, sir. Lot of Muslim organizations like All India Muslim Personal Law Board, Jamaatul Ulama, and Jamaatul Islam Hind, and various other Muslim organizations have raised their objections. And even our party has raised objections in the JPC, sir. All our objections were in line with what OICG has also raised. So most of them were not considered. And in a country where we have almost 14.6% Muslims and 20 crore, it translates to 20 crore people, I think their concerns should be taken very seriously. Sir, we have concerns regarding this bill, and I would like to give out the reasons why we are going to oppose this bill, sir. So this bill is unconstitutional as it violates Article 14, 25, 26, read with Article 13 of the Constitution. Article 13 of the Constitution says that laws inconsistent with or in derogation of the fundamental rights shall be void. Sir, even Article 14 says equality before law and equal protection of the law. Sir, even Article 25 guarantees all citizens the right to freely profess, practice, and propagate their religion, sir. And Article 26 says that subject to public order, morality, and health, every religion, denomination, or any section thereof shall have the right to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes, and to manage its own affairs in the matters of religion. Sir, this also violates Article 26, and there have been unnecessary changes like changing the name and inclusion of non-Muslim members under Section 9 and 14 of the bill, which is unnecessary. And also the bill weakens the Waqf Board financially, sir. Amendment to Section 72(1) reduces the annual contribution payable to the board from 7 to 5%. This provision has the potential to bankrupt a board, sir. And there are various other concerns also. So we oppose this bill, sir, and I would like to mention that
Telugudesam party took our name. So I would like to say that what they have spoken today and what they have done today, not one minority in our state will approve of that, sir. And Y.S. Jagannath Reddy has given a word that he will stand by the Muslim community for the Waqf Board bill, and we have stood our ground. And I would like the people of Andhra Pradesh to note that Chandrababu has ditched the minority community, sir. Thank you very much.